Hi guys, welcome back to the Nifty City channel. So as you guys know, every Sunday we do analysis video. So we are back. So before we start the video, एक like कर दो यार guys, please. वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए channel को, so that you get regular updates. Now diving into Nifty Bank Nifty कि क्या होने वाला है, what is going to happen in the index. तो सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है. सो दिस इज द डेली चार्ट. तो बेसिकली हमने क्या किया है ये वीक में कुछ नहीं किया है, कंसोलिडेट किया है. ठीक है, कुछ मूवमेंट ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, एक टाइट रेंज में चले हैं हम. नाउ टुमारो दैट इज मंडे या तो ट्यूसडे, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग मूव इन द इंडेक्स. ठीक है, 200-250 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट मिलेगा इंट्रा डे. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज़ अपने चार्ट्स पे जो लेवल्स डिस्कस करेंगे फ्यूचर चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो. एक क्रूशल स्टॉक देखेंगे, हैवी वेट इंडेक्स, एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक देखेंगे जो एक अच्छे लेवल पे हम बाय कर सकते हैं. राइट. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, तो बेसिकली we've seen a good enough rally. Now we are seeing a consolidation phase. अभी important क्या होगा going ahead is कि क्या ये lows break होते हैं, क्योंकि अगर ये lows break हुए, so we are going to see a very good fall in the market, right? So first तो ये low break हुआ तो we may directly come down to 16,900 के आसपास. 16,900 अगर break हुआ, then there will be a big fall, at least to 16,500. So these are some of the important things to watch out for. Now diving into the exact level, तो 5 minute पे जाते हैं. Now this is the Nifty futures chart, right? So now Nifty future chart में what has happened? Now basically we had a previous days low here. ये लो का breakdown failure हुआ है. ठीक है, very clearly. Now as you can see, late during the day, late एकदम buying आई है, which is a positive sign कि buying आई है late. But क्या हमको एक बायस बना के जाना है मार्केट में? नहीं. तो कल के लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी हम क्या रखने वाले हैं, 15 मिनट का डे हाई और डे लो मार्क करने वाले हैं. राइट. अभी सपोज दिस इज 5 मिनट चार्ट, तो दिस इज द 15 मिनट हाई एंड दिस इज द 15 मिनट लो. जब तक ये हाई या लो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है. ठीक है. अभी जैसे कि ये दिन में हमको क्या लग रहा है कि इधर आया, इधर एक अच्छा रिजेक्शन दिया, ऊपर गया, फिर फेलियर हो गया. बट डू वी हैव टू टेक अ ट्रेड हियर? नो, वी हैव टू टेक अ ट्रेड हियर ब्रेकडाउन. इधर ट्रेड लेते तो क्या होता, बहुत टाइम पास होता. फाइनली इधर इसने ब्रेकडाउन दिया है 15 मिनट लो का, एंड इफ यू कैन सी देयर इज वेरी गुड वॉल्यूम एट दिस टाइम. So we have to keep volume in mind. We have to mark the 15-minute high, 15-minute low, and also a very important aspect of this will be our VWAP indicator. ये आपको एक VWAP indicator chart पे लगाना है. So the condition for taking a trade, by chance अगर 15-minute low या 15-minute high, ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं, गैप अप खुले हम, SGX निफ्टी करंटली पॉजिटिव दिखा रहा है. इफ वी ओपन गैप अप 15 मिनट, 3 ग्रीन कैंडल बने 5 मिनट के, so we mark the high and we mark the low. Now if the 15-minute low breaks down, breakdown मतलब क्या होता है कि the 5-minute candle should close below the 15-minute low. ठीक है, लो के नीचे क्लोज हुआ, VWAP के नीचे है डेफिनेटली, और वॉल्यूम भी है, तो डेफिनेटली वी शुड एंटर इनटू अ शॉर्ट ट्रेड. सिमिलरली अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलते हैं और 3 ग्रीन कैंडल बने, 15 मिनट हाई कटा, वीवैप के ऊपर है, वॉल्यूम भी अच्छा है, देन वी शुड गो लॉन्ग. ओके, बहुत इजी सेटअप है, अच्छे खासे पॉइंट्स ट्रेंडिंग डे में हम निकाल सकते हैं कल या तो परसों मैक्सिमम. ये जो लास्ट वीक का रेंज कंसोलिडेशन था, वी आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ दैट रेंज. ओके, नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द लेवल्स. So first, most important level to mark out is the flip.
Okay, 17117 to 17141. Now what is the flip? Flip is basically a trend deciding area. Flip के ऊपर मतलब पॉजिटिव, फ्लिप के नीचे मतलब नेगेटिव. Okay, it's an important crucial area. So we can see a lot of action happening inside the flip. Major breakout या breakdown हो सकता है flip के आसपास. Moving up, important level swing 17253. उसके ऊपर we have 17286 to 17311. उसके ऊपर we have 17396 to 17431 and उसके ऊपर we have 17474 to 17495. Okay, तो ये levels mark कीजिए. Now on the lower side 17065, 16992 to 17009. उसके नीचे we have 16870 to 16898 and 16789. अब इसके नीचे भी levels तो बहुत है हमारे पास, but you can mark these levels till here. Okay, now this will be the crucial zone 16992 to 17009. इसके नीचे अगर ये zone break हुआ, so we will be very negative. But one thing that you have to keep in mind कि ये zone के नीचे जाके एक breakdown failure के भी बहुत ज्यादा chances है, क्योंकि 17,000 पे अच्छी खासी put writing हुई है. Now moving on to Bank Nifty. सेम स्ट्रैटेजी हमको बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करनी है. अभी बैंक निफ्टी में अगर आप वॉल्यूम में देखेंगे तो देयर इज वेरी गुड बाइंग एट द फैग एंड ऑफ द डे. ठीक है, एकदम सेफ रैली हुआ है. सो important flip area that we have to mark is 35311 to 35371. Upside पे then we have 35800 and then we have 35994 to 36041. उसके ऊपर एक लास्ट लेवल यू कैन नोट डाउन इज 36146 टू 36210 and then 36414. इसके ऊपर I don't see the market. On the downside we have the support of 35169 to 35256. Then we have 34870 to 34741. We have 34615 and 34438. Okay, these are the downside levels. Now if there is a crack, okay, if suppose the downside पे levels टूटते हैं, so I will be more interested in playing the short side in Bank Nifty rather than Nifty. Reason being, Bank Nifty ने अपना जो एक रेंज था वो तोड़ के नीचे आया, बट बाइंग हुई फैग एंड ऑफ द डे पे और वापस चला गया. तो अभी अगर सेकंड अटेम्प्ट होता है एंड बैंक निफ्टी अगेन फॉल्स, तो बैंक निफ्टी में एक ड्रास्टिक फॉल होगा, क्योंकि जितने रेंज में वो ट्रैवल कर रहा था उतने पॉइंट का हम डाउन साइड लेंगे. नाउ पहले तो क्या करते हैं, लेट्स गो टू ऑप्स्ट्रा एंड सी द ऑप्शन चेन. ओके, नाउ दिस इज द ओपन इंटरेस्ट. नाउ यू कैन सी ओपन इंटरेस्ट पे 17,200 पे एक मेजर फाइट है, okay, between bulls and bears. Now this is going to be the crucial level. If we break down 17,200, we have an immediate support at 17,000, which will be our last support. Okay, so when I say 17,000 पे unwinding कब होगी, जब 16,900 ब्रेक होगा. तो ऐसा मत सोचिए कि 16 जैसे ही 17,000 ब्रेक हुआ तो जितने भी पुट राइटर्स थे वो भाग जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. 17,000 जैसे ब्रेक होगा, पुट राइटर्स विल ट्राई टू डिफेंड इट, but as soon as 16,900 breaks, the put writers will start running away. Okay, they will give up. So this is these are the important levels. On the upside, once 17,200 is taken out, then we can definitely comfortably say 17,500 के आसपास market को देखेंगे. That is where the next major resistance is. On Bank Nifty, 36,000 is a major tower. Again, now you can see 35,500 पे put writing है, but it is not very strong put writing. So in case there is a crack, you can directly see the market at 34,000 for me. Okay, Bank Nifty में ज़्यादा fall आएगा compared to Nifty if there is a crack. Right, now discussing two important stocks. Okay, first is our heavyweight Reliance. ठीक है, अब Reliance में let's move on to the daily chart and see what's happening. Okay, so Reliance में this was a crucial area. Okay, इसका significant breakout clear cut way में हमको मिल चुका है. Now if Reliance
for example, forms a daily candle, red candle like this will be a clear-cut breakout failure. Okay, and then you will see a good enough downside in Reliance. So I'll try to give you the targets also. So what we'll do is we'll draw a simple Fibonacci retracement. Okay, so we can see, you can see here, this is 38.2% level with this swing. So directly you can see from the level of 2595, you will directly see Reliance at least at 2448 and maybe also at 2397. In case a red candle forms closing below this level, okay, that will be a breakout failure. So keep Reliance on your radar. बहुत ही heavyweight stock है Nifty का. In case there is pressure in Reliance, you will definitely see pressure in Nifty as well. Okay, साथ साथ चलने वाले ये दोनों. Another important stock that I am going to be discussing is Trent. Okay, now this is Trent ka daily chart. Now as you can see, this was a very important level in Trent. You can see multiple times Trent has tried to break out. It has failed. This time it successfully managed to break out. अब क्या हो रहा है Trent में? Moment there is a negative sentiment, Trent may come and retest this level. Okay. Now, as we have learned in the past, जब भी कोई पॉइंट इतना हेवी रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, वो क्रॉस होने के बाद सपोर्ट बन जाता है. तो मोमेंट यू गेट ट्रेंड एट 1202, एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेंड में. सो देन यू कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग अराउंड 1202 इन ट्रेंड. कंडीशन बीइंग कि आपको उधर एक बुलिश ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, या तो कोई रिवर्सल कैंडल दिखना चाहिए, या कोई पैटर्न दिखना चाहिए. स्टॉप लॉस जो भी पैटर्न का कैंडल इधर बनेगा उसके लो के 5 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं. सो यू विल गेट वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. राइट, विल ट्राई माई बेस्ट टू कम लाइव टुमारो. In case you guys like the video, please do like, share and subscribe. It helps us a lot. We have very less YouTube subscribers right now compared to the number of followers we have on Instagram and Telegram. So my request, don't just see the video, subscribe to the channel. It helps us a lot. Like the channel and click on the bell icon. All the very best for tomorrow. Take care. See you guys.